गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये नवरात्रि स्पेशल जो सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग के 9 दिन के स्पेशल इवेंट है जो प्रदीप सर कंडक्ट कर रहे हैं, वो एक कोलैबोरेशन इवेंट है जिनमें हमारे साथ मेडिटेशन मैजिक यूट्यूब भी जुड़ा हुआ है। वो इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा है और आज उनकी फाउंडर हमारे साथ दिव्या जी जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने चैनल के बारे में और अपने इस सर्विस के बारे में कुछ साझा करें। तो वेलकम दिव्या जी, वेलकम वेलकम टू ज्ञान भारत। अच्छा, एक एक सेकेंड। यस दिव्या जी। Yeah, thank you, Netaji. So, hello everyone. My name is Divya Nadimpally. I'm joining from Dallas, Texas. So, this program, this 9-day Navaratri meditation program by Pradeep Vijay sir, is a collaboration effort of Gyaan Bharat channel and also Meditation Magic organization. So, a little bit more about Meditation Magic. It's a non-profit organization started in 3 years ago in Dallas, Texas. This name is given by Patriji himself. It started as a newsletter in 2016. After 2 years of the newsletter, it changed into a YouTube channel. After 3 years of being a YouTube channel, we started into a non-profit organization so we can serve a better in the US population. So under this platform, we have been doing many, many meditation sessions, both online and in person. So online, we meet every day, Monday to Friday, 9 p.m. to 10 p.m. And also we do in-person sessions every Friday evening and Sunday afternoons in Dallas. So we have a channel, YouTube channel, in which we do interviews of people about how meditation has helped them in their physical life, how it has transformed them emotionally, physically, whether it may be financial success or relationships. We just want to inspire people to imbibe meditation into their life. So that's a main motto of this channel, to inspire people and empower people to do meditation. थैंक यू दिव्या We जी। have a Thank you, Netaji. कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। We have a small group of volunteers who come together, and with that, we're doing a larger programs, about 150 people, 200 people. And recently, last year, we did a huge program called Mega Meditation Summit. About 1,000 people from all over USA has come to do meditation. That's a recent program. थैंक यू। तो फ्रेंड्स Back to you, Netaji. थैंक यू। तो फ्रेंड्स वो बता रही हैं कि मेडिटेशन मैजिक को 3 साल पहले पत्री सर के गाइडेंस में खोला गया था और उसका भी यही उद्देश्य है जो ज्ञान भारत का है कि नॉन प्रॉफिट हम लोगों की बिना कोई स्वार्थ के हम लोगों की सेवा कर सकें। 2 साल पहले इन्होंने न्यूज़लेटर भी स्टार्ट किया है। मंडे से फ्राइडे ये सामूहिक रूप से ध्यान कराते हैं और ज्ञान बांटते हैं और 2 दिन वो पर्सनल गाइडेंस देते हैं। अपने प्रोग्राम्स में वो काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लेते हैं जिसमें वो अपनी आत्मा की जर्नी को शेयर करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा अपने को ट्रांसफॉर्म किया और इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर होते हैं और एम्पावर होते हैं, सशक्तिकरण होता है उनका कि वाकई हम मेडिटेशन के द्वारा अपने को एम्पावर कर सकते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि सभी लोग मेडिटेशन करें और इस बात पे आगे बढ़ें। इसका टाइमिंग्स इन्होंने बताया है सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक। क्योंकि ज्ञान भारत सिर्फ इवनिंग सेशंस ही कराता है, तो यदि कोई सुबह के सेशन अटेंड करना चाहता है तो वो मेडिटेशन मैजिक को यदि यूट्यूब में सर्च करेगा तो उसे मिल जाएगा। आप उसमें जुड़कर मेडिटेशन 7:30 से 8:30 बजे तक कर सकते हैं। तो चाहे इंग्लिश में बोला जाए या हिंदी में, भाषा कभी भी हमारे आध्यात्म में बाधा नहीं बनती है। तो आप जरूर जुड़िए,
ग्रुप मेडिटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। तो थैंक यू इतना अच्छा हमको अपॉर्चुनिटी मिली है कि प्रदीप सर के विजडम और उनके मेडिटेशन के द्वारा हम वो अमेरिका में, डलास अमेरिका में कर रहे हैं और हम इंडिया में कर रहे हैं। तो थैंक यू हमारे इस इवेंट में एक पार्ट बनने के लिए। दिव्या जी मोस्ट वेलकम, और आशा करती हूँ आगे भी हम ऐसे इवेंट करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज दूसरा दिन है और हमारे प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान भारत में आपका। Yes, madam. Namaste, everyone. So Divya has been doing an excellent work, and she's also, not only teaching in US, and she's also spreading across many countries, trying to reach out in whatever possible way through this particular channel. And so, yeah, it's a wonderful collaboration, and more collaborations, more friendship, more the soul celebrates. Right? So this is spirituality. Spirituality is all about seeing from the soul perspective. Spirituality simply means you don't see from the mind perspective, you see from the soul perspective. Okay, so from the soul perspective, soul always seeks collaboration. Mind seeks separation. Soul seeks collaboration, cooperation, oneness, friendship. So today we are going to speak more in detail about soul and the very nature of the soul, the very essence of the soul. And we begin with meditation. Okay, so sit comfortably, drink some water. It's always a good practice to drink a little bit of water before you sit for meditation, so that your throat is not dry, so that you are comfortable. And also during meditation, you get a lot of energy, cosmic energy. And so you don't feel thirsty, you're comfortable. So you're making yourself comfortable by drinking some water, darken your room, sit in Sukhasana, any comfortable posture, clasping your hands, crossing your feet. If you're wearing any specs, remove the specs. And the most important point to remember is no expectations. When you're sitting for meditation, absolutely no expectations. Just simply close your eyes and observe your natural breath. The moment you notice any thoughts, don't worry about the thoughts. Don't go behind the thoughts. Simply come back to your natural breath again and again. We will do 30 minutes meditation, my dear friends. तो फ्रेंड्स 30 मिनट के लिए अपने आप को ध्यान के लिए तैयार कर लें। कोई भी अपेक्षाएं मत रखें और अपने जैसे तीनों लॉक लगाते हैं वैसे ही लगाकर बैठ जाएं, पर उसके पूर्व थोड़ा सा पानी पी लें ताकि आप ध्यान में सहज रूप से जा सकें। तो आज सिर्फ 30 मिनट का ध्यान होगा। सभी लोग अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाएं।
Final 10 seconds. Gently place your hands on your eyes. You may slowly open your eyes whenever you're ready.
So drink a glass full of water. सभी लोग थोड़ा पानी पी लीजिए. Okay, so before going into today's topic, I want somebody to recap what we have discussed yesterday. So every day somebody is going to recap. New person. We want people to volunteer in bullet points. What we have discussed yesterday, the essence of it. कोई बताना चाहेगा कल का रिकैप, क्योंकि कुछ लोग आज नए जुड़े होंगे तो उनको मालूम चलेगा. तो कोई भी आप आके बोल सकते हैं. No, it's not only for new people who are joining. It is for us to recap on our own. And also it will be good if people turn on their videos. सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर लें. और ये जो रिकैप है वो नए लोगों के लिए नहीं, हमको अपनी भी सबकॉन्शियस माइंड में फिर से अच्छे से बैठाने के लिए है. तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लें और जिसको भी शेयर करना है वो कर सकते हैं. So who wants to share? You can raise your hand. हाथ उठा लें. And यस they सर. should be on the video. Okay, so now we can have Rashmi Jangira. अभिनंदन सर. हाँ, नमस्कार मैडम. सो आप कहाँ से, आपके बारे में 2-3 सेकंड इंट्रोडक्शन करके आप बताइए. मेरा नाम रश्मि है और मैं भिवाड़ी राजस्थान से हूँ. और मैं ज्ञान भारत से लगभग 1.5-2 साल से जुड़ी हूँ. और मैंने अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस पाए हैं. मेरी फीलिंग्स में किसी के साथ कैसे रिएक्ट करती हूँ, पहले बहुत जल्दी रिएक्ट करती थी, अब चीजों को समझती हूँ. और कल के रिकैप में कि हमें डेली 1 आवर के लिए मेडिटेशन करना है, डेली 1 आवर के लिए बुक रीडिंग करनी है और सज्जन सांगत्य करना है डेली, कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंसी के साथ. और जैसे आपने बताया था कि एक स्टोरी, जो एक खरगोश होता है और एक टर्टल होता है. वो टर्टल स्लो 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 लेकिन कॉन्टिन्यू जाता है. और आलस्य नहीं करना है हमें, जैसे वहां पर खरगोश ने किया था. और स्लो एंड स्टडी हम अपनी रेस को विन करेंगे. और जितनी ज्यादा हम डेली बुक्स पढ़ेंगे उतना हम अपने आप को स्लो कर पाएंगे. अपने आप को स्लो कर पाएंगे उतने अच्छे से हम मेडिटेशन कर पाएंगे. नहीं, बुक्स करने में स्टेडी हो जाए. हाँ, मेडिटेशन और मौन, ध्यान और मौन का रूप में स्लो डाउन हो जाए. हाँ, ठीक हम है, अपने आप को स्वाध्याय slow- और सज्जन सांगत्य, यू आर स्टडीइंग योरसेल्फ. आपका जीवन स्टडी कर सकता है. हम्म. और आपने कुछ दिया था खुद में करने के लिए, मैं थोड़ा सा लास्ट का. Okay, fine. Thank you. Thank you. Anybody else want to? Okay, so we have Shobha. Shobha ji. नमस्ते सर. नमस्ते मैम, नीता मैम. मेरी आवाज आ रही है सर? यस. Yes, so you can continue the points what she Yes. has already covered. उसका छोड़ के और दूसरा points. हाँ, आपने एक पॉइंट मैं इसमें जोड़ूंगी. आपने बोला था जो हमने घर में गार्बेज भर के रखा है, या जो साफ सफाई करनी है 1 घंटा, अपने को रोज 1 घंटा, जो हमने अननेसेसरी भर के रखा हुआ है या जो जरूरत नहीं है वो बांटना है. लोगों जो है ना, अपने को काम का नहीं है वो बांट देना है सर. Okay, good. Thank you. So Anagha. 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 हाँ, Anagha. Yes. Namaste, sir. कहाँ से जी? I am Anagha Maharao.
I'm from Mumbai. मुंबई से, ठीक है, बोलिए मैडम. You started with superior and inferior definitions. Like Yes. if we focus on needs, then we are superior, and focus on greeds, then we would be called as inferior. So in any circumstances, as long as we focus on the needs, we are a wise man and we are a superior human. Our sufferings because of our own overdoing things, or because of our food habits, then our talkative habits, our sleep pattern, sleep in excess. So whatever excess we do, we are going to suffer. And then we have to do new things, because it's in the sense, we know that our nature of soul is such that we want to be happy always. So in order to that, we have to balance our life. Like even if we want to do new things, we should see to it that we don't overdo it. So that kind of middle path we have to take. And we understand our nature of soul and try new things. So seek new things, also be in the balance, in line with not crossing the need, explore and experiment new things. That's Good. Thank you. Thank you. Okay, finally, we have Neeta Lutraji. Yes, good evening, sir. Good evening, ma'am. I think हाँ जी, बोलिए, आप most of कहाँ the से? point. I'm from Sonipat. सोनीपत से हूँ मैं सर. और Sonipat in which state, madam? हरियाणा. Haryana. Okay. हरियाणा से, right. हाँ. तो सर मोस्टली पॉइंट तो आई थिंक कवर हो ही गए हैं. फर्स्ट पॉइंट वाज ग्रीड से ही सफरिंग होती है और लालच ही हमारे दुख का कारण है. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. देन क्लीन योर हाउस. जो चीजों की जरूरत नहीं है उसे निकाल दे. स्कैन योर हाउस. कीप योर थिंग्स विच यू नीड ओनली, अदरवाइज सो गुड कर्मा विल स्टार्ट. ग्रीड किसी की नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फूड की नहीं, हो. क्लीनिंग का गुड कर्म नहीं होता है, एक्सेस थिंग्स दूसरों को देने का गुड कर्मा, राइट. हाँ, you have to give the excess things, then you get good karmas. Right, साफ भी right. हो जाएगा, गुड कर्मा भी आ जाएगा. Read books 1 hour, daily meditation, focus on service. तो फोकस ऑन सर्विस पे मैं कहूंगी कि होल लाइफ मैंने टीचिंग में बिताई है. मैंने 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा. अभी मैं रिटायर हुई हूँ. आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मैं एक एनजीओ में जाती हूँ, जहां मैं 3 आवर्स डेली वहां स्पेंड करती हूँ. वहां के बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेडिटेशन सिखाती हूँ. तो मुझे बहुत, जो आप कह रहे थे ना कि बहुत आनंद अपने अंदर ही है, तो मुझे वो पिछले 4 महीने से इतनी खुशी होती है कि वहां जाना, उन बच्चों, क्योंकि बच्चे भी ऐसे वो हैं जैसे स्लम एरिया के हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको सिखाना, मेडिटेशन का वैल्यू बताना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत ही एक लाइफ एक अलग ही दिशा में चली गई है. So thank you so much. Thank you for teaching again these things. Yes. Thank you, madam. Wonderful. Okay. So today we will explore a little more about understanding our soul, understanding ourselves. So get prepared, be ready with your pen and paper. You are on mute, Neeta. सभी लोग पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी हम सोल के बारे में और ज्यादा जानेंगे. And also be alert. Be alert, bring your awareness, then you get the maximum out of it. Because today's subject will be very interesting. आज आप बहुत ज्यादा सचेत रहें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी आप इसको समझ पाएंगे. Okay, first of all, spirituality. Spirituality is equal to you training your mind to see yourself as a soul entity. Spirituality is simply your ability to see from the soul perspective. We are a soul, and we have to remember always this. At any given point of time, in any given situation,
you see from the soul perspective, then you are a spiritual person. As simple as that. Spirituality is equal to soul perspective. If you are in the mind perspective, you are a materialistic person, because mind is influenced by your surroundings. So all the time, you should be aware that you are a soul, and you should never forget it. This is the difference between an enlightened person and a non-enlightened person. A non-enlightened person, he forgets that he is a soul. He loses the awareness that he is a soul, and he suffers. An enlightened person always see from the soul perspective. And when you see from the soul perspective, every experience counts, every emotion counts, every feeling counts. And the soul rejoices with all the feelings and emotions and experiences, because the soul is seeking that. The soul has come to the planet Earth to seek experiences. The soul has come to the planet Earth to seek feelings, to seek emotions, to experience emotions. So when you see from the soul perspective, every experience is a beautiful experience. And there is no tragedy there. There is no injustice there. Whenever you see from the soul perspective, there is no tragedy, there is no injustice. That is enlightenment. Enlightenment means to see from the soul perspective. Always your awareness should be from the soul perspective. In other words, you are training your mind to see yourself as a soul entity, as a soul variety. Okay. तो फ्रेंड्स, सर ने आज स्टार्ट किया अपने मेडिटेशन सोल के बारे में, और हम जानेंगे। तो उन्होंने कहा है कि आध्यात्म का अर्थ क्या होता है। ये बिल्कुल वही है कि अपने मन को आप प्रशिक्षित करते हैं कि आप एक सोल हैं, शरीर और मन नहीं है। जब आप में ये क्षमता हो जाती है कि आप हर चीज को सोल के दृष्टिकोण से देखने लग जाएं, किसी भी क्षण, किसी भी चुनौती को जब आप सोल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वही आध्यात्म है। अगर मन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये आपके सराउंडिंग के द्वारा प्रभावित होता है, और इस समय आप एक सांसारिक व्यक्ति रह जाते हैं। हर समय याद रखें कि आप एक आत्मा हैं। यही फर्क है एक एनलाइटन और अनएनलाइटन मैन के बीच में, क्योंकि अनएनलाइटन मैन हमेशा अपनी चेतना, अवेयरनेस को खो देता है कि वो आत्मा है और मन और शरीर से तादाद में जुड़ के काम करता है। पर जो एनलाइटेंड पर्सन होता है, वो हमेशा हर समय सोल के दृष्टिकोण से हर चीज को देखता है, हर अनुभव को महसूस करता है, हर फीलिंग को महसूस करता है, और हर इमोशन को महसूस करता है। इन सब से हमारी आत्मा खुश होती है, क्योंकि इसे ही ढूंढने के लिए वो पृथ्वी पर आई है। वो चाहती है कि अनुभव ले, फीलिंग को महसूस करे, इमोशन को महसूस करे। तो हर अनुभव बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कोई भी अन्याय नहीं है और कोई भी ट्रेजेडी नहीं है, हादसा नहीं है। अगर सोल पर्सपेक्टिव से जो ये चीजें देखता है कि नो ट्रेजेडी, मतलब कोई अन्याय नहीं, कोई सदमा, हादसा नहीं, तो वही एनलाइटन पर्सन है। एनलाइटन का मतलब ही है आत्मा के दृष्टिकोण से देखना। इसीलिए हमेशा कॉन्शियसनेस अपने आत्मा के रूप में ही देखने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। You can notice yourself in your own life whenever you are feeling sad, whenever you are feeling low, whenever you are feeling bored, whenever you are feeling dull, whenever you are feeling low. There are only two things. That moment, whenever you are not happy in life, it means your awareness is not on the soul. You don't see life from the soul perspective, point number one. And point number two, you have less energy. You have depleted energy. When you deplete your energy,
And when you don't see life from the soul perspective, you suffer, you feel low, you feel depressed. You can see in your own life. And how do you come out of it? Immediately close your eyes and meditate for 10-15 minutes. You get some energy. And see the life from the soul perspective. Immediately, everything vanishes, all the suffering vanishes. You rejoice. You understand. So these are the only two reasons. When you lose the awareness that you are a soul, and when you deplete your energy because of your unnecessary thoughts, unnecessary worries, unnecessary concerns, unnecessary speaking, you deplete a lot of energy. So when you deplete your energy and when you lose your awareness that you are a soul entity, then you suffer in life. So you can notice in your own life, whenever you are feeling low, that means you lost the awareness that you are a soul entity. That means you lost energy. So your awareness that you are a soul and your energy, these two, when it is low, then you suffer. And it takes only 10 minutes to quickly come back. Only 10 minutes it takes to quickly come back to your joy. You can experiment. Close your eyes and meditate for 10 minutes. And immediately remember the truth that you are a soul. You are a temporary traveler here. You have come here for all the experiences. You have come here for all the emotions. You have come here for all the feelings. You see, from the soul perspective, immediately everything, every challenge turns into an opportunity. Every sadness turns into an understanding. The understanding arises within you only when you see from the soul perspective. Okay. The last sentence क्या बोले थे? Your understanding from within arises only when you see from the soul perspective. तो फ्रेंड्स, सर ने कहा है कि अपने आप को पूरे समय नोटिस करते रहें. यदि आप दुखी होते हैं, लो फील करते हैं, बोर होते हैं या अपने को डल महसूस करते हैं, तब आप समझ जाइए, यानी कि आप उस समय खुश नहीं रहते हैं, तो आप पहली बात तो समझ जाइए कि आप अपने सोल के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं. और दूसरा, आप अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं. जब हम अपनी आत्मा से हटकर सोचते हैं या काम करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को लूज करते जाते हैं और इसी के कारण हमें अपने जीवन में लो फील होता है. इस समय अगर ऐसा है तो तुरंत मेडिटेशन में बैठ जाएं और आप अपनी सोल से जुड़ जाएंगे और हर चीज को सोल पर्सपेक्टिव से देखने लग जाएंगे और सारी परेशानियां आपकी लुप्त हो जाएंगी और आप फिर से खुशी के पास चले जाएंगे, खुशी में आ जाएंगे. तो अवेयरनेस लूज करने से ही हम भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं और इसलिए हमारे पास बहुत सारे अनावश्यक चिंताएं, थॉट्स और बहुत ज्यादा बोलना, ये सब कुछ आ जाता है. सोल एंटिटी के रूप में अपने पहचान को खो देने से ही आप अपने एनर्जी में कम पाते हैं और दुखी महसूस करते हैं. तो याद रखिए, आप हमेशा जब भी अपनी अवेयरनेस, जागरूकता को खोएंगे, यानी कि आपने अपनी आत्मा से दूरी बना ली और आप अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. और ये भी याद रखें कि आपको सिर्फ 10 मिनट देना है अपनी सोल से जुड़ने के लिए. इस मेडिटेशन 10 मिनट मेडिटेशन करने के में आप समझ जाएंगे कि आप यहाँ पर सिर्फ एक अस्थायी यात्री के रूप में आए हैं और ये सभी आपकी फीलिंग, इमोशन, आप इसी को ही फील करने आए हैं. और आपको फिर हर समय चुनौतियां जब आप सोल से जुड़ जाएंगे तो हर चुनौती आपको अवसर लगेगी और आपकी सैडनेस, जो दुखी होने का जो भाव है, वो आपकी समझ से दूर हो जाएगा. और ये सोल पर्सपेक्टिव बाहर से हम नहीं बल्कि भीतर से जुड़ने से ही आता है. थैंक यू. So there are two words. You write down these two words, very important words: choice and decision. Whatever we speak today is related to the soul.
So the heading, the grand heading is the soul, understanding the nature of the soul. Understanding the nature of the soul and the soul journey. So whatever we speak today is all about soul. And there are two words you have to remember: choice and decision. CD, choice and decision. You don't enter the mother's womb without a prior choice. You don't enter the mother's womb without a prior decision. Without prior choice, without prior decision, nobody comes to the planet Earth. Nobody enters the mother's womb. So that means before entering a mother's womb, there is a lot of preparation, lot of choices, and we make certain decisions. The soul makes certain decisions that this is the choice I want and this is the decision I'm going to take. Before birth, we choose. When I say choice, that means we choose our parents. The soul chooses the parents. The soul chooses the country in which it should be born. The soul chooses the environment it is going to be raised up as a child. The soul chooses everything, and the soul chooses its own challenges. What are the challenges I'm going to face in this particular lifetime? Before it is born, the soul will choose the challenges. These are the challenges I'm going to face. And a decision will be made that out of this choice, out of this challenge, I'm going to learn this lesson. The soul decides. The soul decides, and after the decision is made, then only the soul enters. Everything is choice and decisions. Your choice and your decision is before you enter the mother's womb. But after we are born, we forget, because we are influenced by the limitedness of the physicality and the limitedness of the mind. Because of the limited physical perspective, because of the limited mind perspective, we forget. But if you bring your awareness back to your soul, then you remember. You remember that it is your choice. You remember that it is your choice to get married. You remember it is also your choice to get divorced. Everything you remember, whatever might be. Marriage is a celebration, divorce is a celebration. Birth is a celebration, death is a celebration. Sabka celebration hota hai, because it is a choice of the soul. It is a decision of the soul to go through that particular challenge. We are not born to lament our fate. We are not born to suffer our fate or to suffer others' fate. We are not born to suffer thinking our misfortunes or thinking about others' misfortunes. We are born to celebrate our decisions. So the choice and the decisions are made before birth. And after birth, we are here to celebrate our choices and decisions. Because in every choice, in every decision, there is something to learn. You have to underline this. In every choice, in every decision, there is something to learn. And when you learn, you celebrate. The soul is here to rejoice. The soul is here to celebrate. Whatever might be the challenges you go through in life, you have to understand that you are not here to complain about your life. You are here to celebrate your life. So every time you are complaining, that means you are ignorant. Every time you compare yourself with another person, that means you are ignorant. Because you cannot compare yourself with anybody, because your soul, your choice, your decision, it has nothing to do with the other person.
So don't compare. You are simply a unique person. Your soul journey is beautifully designed. You are very unique. Your journey is very beautiful. So you cannot compare yourself with anybody. Your life situations is simply unique to yourself. Every time, anytime you complain, you are ignorant. Every time you complain, you are bound to suffer because of your own ignorance. And any time you compare, you are bound to suffer because of your own ignorance. No complaints, no comparison. Accept that this is your decision. Accept that this is your own choice and learn from it. Nothing happens by fluke. There is a very careful background work which has happened before you are born. So every moment of your life, you accept whatever the decision, whatever the choices which is in front of your life. Accept the current moment, accept the current situation, and learn the lessons from it and keep moving forward. This is how you celebrate life, my dear friends. Yes, ma'am. इन्होंने कहा है कि 2 वर्ड्स आप लिख लीजिए जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। ये आत्मा का स्वभाव है कि क्योंकि जो भी अब हम सीखेंगे वो हमारी यात्रा के बारे में है। 2 वर्ड हैं, चॉइस और डिसीजन, विकल्प और निर्णय। जब भी हम माँ के गर्भ में आते हैं उस समय हमें चुनाव के लिए बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं, चॉइसेस दी जाती है, और उसके बाद हम उसमें से एक चॉइस को, एक पेरेंट को हम चूज करते हैं और निर्णय लेते हैं कि मैं यहाँ पे जन्म लूंगा। तो उसके बाद ही हम उस गर्भ में आते हैं। तो जन्म लेने के पहले ही हम अपने पेरेंट्स चुनते हैं, अपने देश को चुनते हैं, अपने घर के आसपास के वातावरण वगैरह सब कुछ चुनते हैं। हर चीज जो आपके जीवन में हो रही है उसे आप ही चुनते हैं, और जितने आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं वो भी आपने ही चूज किया है, जिसका आप अभी सामना कर रहे हैं। आपने ही डिसाइड किया था कि इस चुनौती में मैं ये लेसन सीखूंगा या मैं ऐसा बनूंगा। तो निर्णय आपका था, चुनाव आपका था, और ये सब कुछ आपने गर्भ के पहले ही तय कर लिया था। पर अक्सर हम पैदा होने के बाद ये सब चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड की लिमिटेशंस हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने वहां पे क्या निर्णय लिए थे। तो आप जब अपनी अवेयरनेस को अपने आत्मा की तरफ लेके आएंगे तब आप जान पाएंगे कि आपने ही ये इसको चुना था, फिर चाहे वो शादी हो या कोई भी चुनौती हो। अगर आप शादी करते हैं तो वो भी एक सेलिब्रेशन है, पर अगर अपनी चुनौतियों के कारण अगर इसको डिवोर्स के रूप में परिवर्तित होते हुए देखते हैं तब भी वो एक सेलिब्रेशन है। सब चॉइस है, सभी निर्णय आपने लिए हैं। हम यहाँ पर रोने के लिए नहीं आए हैं कि हमारा भाग्य खराब है, ना ही दूसरों के भाग्य को देखकर हमें रोना है। हम अपने जो भी चीजों को हमने चूज किया है वो रोने के लिए नहीं, अपने कुछ सीखने के लिए चूज किया है। तो अपने चॉइस और अपने डिसीजन को आप सेलिब्रेट करिए। हर चुनाव, हर निर्णय हमको कुछ सिखाने के लिए है। यहाँ हम खुश होने आए हैं, जीवन को सेलिब्रेट करने आए हैं। कंप्लेन नहीं, सिर्फ सेलिब्रेशन को ही याद करिए। जो व्यक्ति कंप्लेन करता है वो अज्ञानी है। जो अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना दूसरों से करता है वो भी अज्ञानी है। हर आत्मा दूसरे के समान नहीं होती। आपके चुनाव, आपके निर्णय आपकी आत्मा ने लिए हैं, और आप स्वयं में एक यूनिक हैं, और आपकी जो ये यात्रा है बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसीलिए किसी से भी अपने को कंपेयर मत करें। लाइफ की जैसे भी सिचुएशन जो आपने खुद बनाई है चूज करके, उसमें आप कोई भी कंप्लेन मत करिए। नहीं तो जितना आप कंप्लेन करते जाएंगे फिर से आप पैदा होकर उसी चीज को सफर करने के लिए आएंगे। तो आपका निर्णय
यहाँ पर कुछ भी संयोग नहीं है, पैदा होने के पहले ही हमने सारे निर्णय ले लिए थे। अब केवल हम यही कर सकते हैं कि जो भी जीवन में हमारी सिचुएशन आ रही है, चैलेंजेस आ रही है, उनका हम सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएं और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहें। थैंक यू सर। Okay. So soul is equal to, you write down, soul is equal to, क्या है आत्मा, क्या है, what is soul? Soul is equal to infinite energy. Number one, soul is equal to infinite energy. Number two, soul is equal to pure consciousness. Number three, soul is equal to pure awareness. Number four, soul is equal to pure curiosity. Curiosity. Underline the word curious. Soul is equal to curiosity. And soul thrives experiences. Soul thrives for experiences. Soul looks for different kinds of emotions, feelings, emotions and feelings. Soul is always seeking emotions, different kinds of emotions. Soul wants to experience every kind of emotion. Soul wants to experience every kind of feeling. Feelings and emotions are very, very important for the soul. Every feeling counts, every emotion counts. So this is soul. This is the very nature of the soul. Soul is equal to infinite energy. We think ourselves as very small, but we are infinite beings. Yes, when it comes to physicality, we are limited. When it comes to our mind, also there is a limitation. But soul is unlimited, infinite. Infinite energy, infinite possibilities. And soul is pure consciousness. Pure consciousness. Nothing happens to the soul. No matter whatever might be the experiences you have gone through, your soul is always pure. Impurity cannot even touch the essence of soul. The soul is always pure, no matter what experiences you have gone through. Whatever might be the experiences, whatever might the ugly experiences, whatever might be the not so pleasant experiences you have gone through, but your soul always remain pure. And soul is pure awareness. Your soul is pure awareness. The very quality of awareness determines the nature of the soul. You see, a newborn child is always full of awareness. Any small change in the house, the child notices. The child is always aware. Awareness is the very quality of the soul. So soul is equal to infinite energy, pure consciousness, and pure awareness. And soul is equal to curiosity. Again, pure curiosity. The child is curious. Always the child is curious. The child is curious to know new things. The child is adventurous. So, I ask you to underline curiosity. Curiosity is equal to the emotion of adventure. Curiosity is equal to the emotion of adventure. Curiosity is equal to the emotion of trying new things. Newness. Always try new things. And curiosity is equal to the emotion of dareness. For everything, the soul is ready. Daring and dashing. So that means that is the emotion of
Curiosity is equal to emotion of dareness. And curiosity is also the emotion of why not. There's always a why not. For every question of why, there is why not. For every question of why, the answer is why not. So again, this is the emotion of why not. So a soul, the very quality of the soul is equal to energy, consciousness, awareness, curiosity. And curiosity is equal to the emotion of adventure, the emotion of newness, the emotion of daring, and the emotion of why not. So this is the very fundamental nature of the soul. And also, the nature of the soul is dissatisfaction. Dissatisfaction. Soul can never be satisfied. I want all of you to write down these points and again go through these points, because when you understand this, then you're understanding yourself, you're understanding the soul. Adventure. Curiosity is adventure. Adventure means exploring new things. Adventure, exploring new things, daring, and questioning, why not? So all these things comes from curiosity. And curiosity is the very quality of the soul. And curiosity always goes with dissatisfaction. Curiosity goes hand in hand with dissatisfaction. If you are satisfied, then you cannot be curious. Only when you are dissatisfied, then you are curious. So this is the fundamental nature of the soul, my dear friends. Once again, I repeat, the quality of the soul, or in other words, soul is equal to pure energy, pure conscious, infinite energy, pure consciousness, pure awareness, pure curiosity. Again, in curiosity, subdivisions, exploring nature, adventurous nature, daring nature, questioning why not. And the last point, soul is equal to dissatisfaction. So these are the very qualities of the soul. Okay, madam. तो फ्रेंड्स, सर ने कहा कि अब हम जानेंगे कि सोल क्या है। सोल एक इनफाइनाइट एनर्जी है, प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर अवेयरनेस है और प्योर क्यूरोसिटी है। सोल हमेशा अनुभव करना चाहती है और उसके लिए ही वो प्रयास करती है। वो डिफरेंट टाइप के इमोशंस और फीलिंग को महसूस करना चाहती है। हर प्रकार की फीलिंग और इमोशंस आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर फीलिंग काउंट होती है, इमोशंस काउंट होते हैं और यही आत्मा का स्वभाव है। हम स्वयं को हमेशा छोटा मानते हैं, लिमिटेड मानते हैं। फिजिकलिटी के हिसाब से हमारा शरीर और हमारा मन की एक सीमितता है, लिमिटेशन है, पर आत्मा इनफाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। वो प्योर कॉन्शियसनेस है और ऐसा फिर वो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसमें कुछ भी नहीं घटता। जो भी आप अनुभव करते हैं, अप्रिय चीजें या कोई बुरा काम करते हैं, जो भी चीजें वो सिर्फ अनुभव करती है, दुख वगैरह जो भी चीज हम फील करते हैं वो सिर्फ अनुभव करती है, पर उसमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो प्योर कॉन्शियसनेस है। वो अछूती रहती है, सिर्फ साक्षी भाव से वो देख रही है। तो ये क्वालिटी है सोल की अवेयरनेस। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो कितने ध्यान पूर्वक हर चीज को करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अवेयर रहते हैं। ये जो अवेयरनेस बच्चों की जो क्वालिटी है, वही सोल की भी क्वालिटी है। और इसकी एक और क्वालिटी है क्यूरोसिटी, उत्सुकता। जैसे बच्चा हर चीज को करने के लिए उत्सुक होता है, वैसे ही आत्मा भी बहुत ज्यादा उत्सुक होती है। उत्सुक वो किस किस चीजों में होती है? अपने एडवेंचर लेने को, रोमांच, भावनाओं के रोमांच को महसूस करने के लिए, नई चीजों को करने के लिए,
और इमोशंस को फील करने की साहस करती है वो। डेयरिंग और ट्राइंग न्यू थिंग्स और इमोशंस ऑफ एडवेंचर। क्यूरियोसिटी में वो आत्मा कोई भी चीज जब अनुभव करना चाहती है तो वो अपने आप से ही एक क्वेश्चन करती है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती, इसलिए वो हर चीज करना चाहती है। ये आत्मा की क्वालिटी है। फिर से याद दिला दूं, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी जो प्योर फॉर्म में है वही हमारी सोल की क्वालिटी है। क्यूरियोसिटी को हम ये समझ सकते हैं कि वो आत्मा न्यूनेस चाहती है, कुछ नयापन चाहती है, इमोशन के रोमांच चाहती है, डेयरिंग, साहस करना चाहती है, और खुद से मैं क्यों नहीं करके उस चीज को अनुभव करती है। डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि भी आत्मा की एक क्वालिटी है। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। बार बार इस चीजों को आप पढ़ें और आप समझें, तभी आप अपनी आत्मा को समझ पाएंगे। क्यूरियोसिटी, एडवेंचर का अर्थ है हमेशा नई चीजें करने के लिए आत्मा उत्सुक होती है, और इसी के लिए वो साहस करती है, और इसी के लिए क्यों नहीं करके उस चीज को अनुभव करती है। हर चीज जो पता नहीं क्या, ये सब चीजें ही आत्मा के गुण हैं। और हमेशा वो असंतुष्ट होती है। जिस दिन वो संतुष्ट हो जाएगी तो वो और कुछ ज्यादा सीखना नहीं चाहेगी। और ये सोल का फंडामेंटल मौलिक गुण है। Okay. So now, do you understand why, in spite of meditation, in spite of reading books, sometimes you feel dissatisfied, sometimes you feel low? Because that is a very fundamental nature of the soul. So if you are feeling dissatisfied, if you are feeling low, that simply means you are not adventurous enough. That means you are not trying new things. That means you are not exploring new things. That means you are limiting yourself. You are not daring. You are so worried about others' opinions. You are not raising up and questioning why not. So whenever these things are lacking, you feel very low. Okay. So whenever you feel very low, then you know what to do. So this is the statement of Jesus Christ. Unless you become a childlike, you cannot enter the kingdom of God. Unless you become a childlike, you cannot enter the kingdom of God. Because a child is curious. Have you ever seen a child who is very sad, who is disappointed in life? No. The child is full of energy, bubbling with energy. The child wants to do new things. The child is always curious to know new things. The child is always adventurous. And anything you say, the question the child will ask, don't do this. The child will ask, why not? Why not I should do that? So, curiosity is the very nature of the soul. To be adventurous is the nature of the soul. To be daring is the nature of the soul. To try new things. You have come to the planet Earth to try new things, Baba. And if you lock up yourself in the room, putting money in the bank account and thinking the money will get spent, so I better put it in fixed deposits, and you are staying at home, then naturally you are sad. Use that. The money is there for you to explore new things. Money is there for you to do some adventure. Go for adventure. Go for a holiday. Try new things. You either use the money for yourself or use the money for others. You are not using the money for yourself and you are not using the money for others, then you are bound to suffer. That is the very nature of the money. Money is energy. It should flow. If the water is stagnant, you see the river water is always pure. Water which is flowing is always pure. But the water which is stagnant becomes impure. So you have a lot of energy. You have to put use that energy. You have a lot of money, then you put to good use. Use that money for a good purpose, either for yourself, either for your celebration or for others' welfare.
then naturally your soul is rejoicing. Every gift comes with a responsibility. You have to underline this statement. Every gift comes with a responsibility. You have gifted with good wealth, you have gifted with a lot of money, then you have a certain responsibility how to use that money properly. You have gifted with certain knowledge, you have gifted with certain wisdom, then you have to share it. That is your responsibility. You cannot keep your knowledge and wisdom within yourself. You have to share it with others. That is a responsibility. You are a born intelligent person. That is a gift. You are born intelligent. Then don't use that intelligence for competitiveness. Use that energy for cooperativeness. If you are having the energy of competitiveness, then you are bound to suffer. If you are having the attitude of cooperation, collaboration, then the soul rejoices. So every gift comes with responsibility. The responsibility is to put it to the good use, to use it wisely. So when you are using it wisely, then your soul is rejoicing. Okay. So you would have seen rich people, people with a lot of money, they go and donate the money to the charities. Why? Why they do that? Because they have everything in life, but no peace in life. If they keep all the money within themselves, there is no peace. You keep how much ever you want, and the excess, you share it with others who needed it the most. And again, when you're sharing, you should share it with responsibility. You cannot make another person lazy. You cannot donate money so that the other person becomes dependent on you. No, that is again irresponsibility. You should use the money in a wise way, where through your charity, the other person becomes empowered. Your actions should always make another person empowered, not dependent on you. When you are teaching meditation and spiritual science, you should empower the other person. You cannot make other people dependent on you. Have the groups. Oh, this is my group. These are my students. These are my disciples. I want to hold them tight. Then you are making them dependent on you. Then you are bound to suffer. This lifetime and the next lifetime also, because the karma will continue. So you should always make everybody independent. Your actions should make other person independent, empowered. Then it is a right action. So when you are donating money also, you should donate money to a charity, to a spiritual organization, or to anybody which empowers them. Okay. So it needs a lot of wisdom. So you have to again and again remember, every gift comes with a responsibility. And that responsibility you will understand only through meditation. The more you do meditation, the more your awareness increases, because awareness is the quality of your soul. The more you do meditation, more your awareness increases. And with more awareness, you know what to do, what not to do. What to do, what not to do is $1 million question. Nobody will tell you. Nobody can tell you. Only your soul has to guide from within you. Your soul has to guide from within you what to do, what not to do. And that guidance comes through the awareness. The quality of the very awareness guides you. What is right, what is wrong, what to do, what not to do. So meditation is a tool
for you, for the inner guidance. So meditation is very, very important. So this is where the quality of awareness comes into the place. Okay, madam. I think we will stop here and tomorrow we'll continue. And more interesting things to come tomorrow. Meditate upon it. I wish you practice all the 3 points. And today I'll give a new assignment. The new assignment is you eat only 2 times a day. Only 2 meals a day. Don't eat 3 times. Only 2 times. And this practice, you have to do it throughout your life. But to begin with, you do this experiment for the next 8 days. Only 2 meals a day. The rest of the time, in the middle, you are feeling hungry, drink plenty of water. After drinking water, you are still feeling hungry, eat fruits. But cooked food, only 2 times a day. Okay. So this, I want you to experiment and you will see how light you feel in the body. And this is how you take care of your physical health. 2 meals a day. The morning, after sunrise, the first meal, in the evening, before sunset. That means by 6:30, 7 p.m., you should finish your dinner. Morning, you can combine your breakfast and lunch and have the brunch at 10 o'clock, 10:30, whatever the time. Eat brunch and then dinner. 2 meals a day. The rest of the time, drink plenty of water, eat a lot of fruits. But cooked food, you should restrict to only 2 meals a day. And half stomach, not full stomach. 50% to 75% of the stomach you should eat. There should be a little bit of hunger left. After you finish the meal, this is very important point. After you eat the food, there should be at least 10% hunger should be left so that you can enjoy the next meal. You should not eat belly full. 10% of the hunger should be still there after eating the meal. That is the healthy way of eating. I want you to do this as an experiment. Do this as an experiment. You will understand. Okay. So thank you very much. Tomorrow we will interact more and we'll understand a little more about this very beautiful topic of soul and understanding the soul. And enjoy the day. Have a wonderful time. Thank you very much. Sabko namaskar. Thank you, sir. Thank you very much. तो फ्रेंड्स, कंक्लूडिंग पार्ट का हम समझते हैं सर का कि आप लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, बुक भी रीड कर रहे हैं, फिर भी आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, लो फील हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में एडवेंचर पर्याप्त रूप से नहीं है। आप कुछ भी चीज एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, न्यू थिंग्स को आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, साहस नहीं कर रहे हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। इन सब चीजों के अभाव के कारण ही आप लो फील करते हैं। अब समझ गए कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। जीसस ने कहा है कि मेरे स्वर्ग के राज्य में केवल वही लोग आ सकते हैं जो बच्चे के समान होंगे। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे बच्चा फुल एनर्जेटिक होता है, क्यूरियस होता है नई चीजों को जानने के लिए, वैसे ही आपको बनना है और हमेशा कुछ न कुछ रोमांच के लिए करते रहना है। आप जब बच्चे को कहते हैं कि इस चीज को नहीं करो तो बच्चा पूछता है क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो ये उसका नेचर है बच्चे का। वैसे ही हमारी आत्मा का भी स्वभाव है एडवेंचर करना, न्यू थिंग्स को ट्राई करना। आप पृथ्वी पर इसीलिए आए हैं कि आप नए नए चीजों को अनुभव करेंगे। अगर आप रूम में बंद हैं, अपने घर में ही रहते हैं, आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, तो ये पैसा आपको खुशी नहीं लेगा, आपको संतुष्टि नहीं देगा। आप अगर आपके पास पैसा है तो आप नई चीजों को ढूंढने के लिए हॉलीडेज में जाइए और एंजॉय करिए, नई नई चीजों का पता करिए। और अगर अपने लिए यूज नहीं कर सकते इस पैसों को तो आप दूसरों के लिए यूज करें। अगर आप पैसों को सिर्फ अपने
स्वार्थ के लिए ही बैंक में रखे रहते हैं तो ये आपको फिर से सफरिंग की ओर लेके जाएगा। पैसा एक एनर्जी है, इसको फ्लो होती रहनी चाहिए। जैसे नदी में पानी बहता रहता है तो हमेशा स्वच्छ और ताजा रहता है, पर जब पानी रुक जाता है तो वो इम्प्योर हो जाता है और सड़न पैदा होती है। बिल्कुल वैसे ही आपके पास जो भी एनर्जी है उसका पूरी तरीके से आप यूज करें। अगर पैसा है तो उसको यूज करें अपनी सेलिब्रेशन के लिए या दूसरों के भले के लिए, पर कहीं ना कहीं पे उसको यूज करना है, तभी आत्मा खुश होती है। जो भी गिफ्ट आपके पास आती है वो कोई जिम्मेदारियां लेके आती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो गिफ्ट दी गई है उनका कैसे उपयोग करें। जैसे पैसा है तो आपको पैसे को यूज करना आना चाहिए, अपने लिए या दूसरों के लिए। और यदि आपको नॉलेज और विजडम से गिफ्ट, मतलब आपको गिफ्ट मिली है ज्ञान की, तो आप इसे अपने तक के सीमित नहीं रखें, आप इसको बाहर बांटिए। अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं तो अपने बुद्धिमानी का उपयोग केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सफलता पाने के लिए नहीं करना है, बल्कि अपनी बुद्धिमानी का उपयोग आपको कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के लिए करना है, तभी आत्मा खुश होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको गिफ्ट के साथ आती है उसके कारण आपको बहुत ही वाइजली, बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक, विवेक बुद्धि से आपको चूज करना चाहिए कि उस चीज को मैं कैसे बांटूं या कैसे शेयर करूं, तभी आत्मा खुश होती है। आप लोगों ने कई अमीर लोगों को देखा होगा, उनके पास पैसे बहुत रहते हैं पर मन में शांति नहीं रहती है। इसीलिए वे डोनेट करके उस खुशी को पाना चाहते हैं ताकि आत्मा खुश हो और वो भी शांति पा सके। तो यदि आप पैसे को रखते हैं अपने लिए तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आप पर ये जो पैसा देते हैं वो फिर से आप अपनी जिम्मेदारी पूर्वक दें, क्योंकि ये पैसा अगर दूसरे को डिपेंडेंट बनाता है या दूसरे को आलसी बनाता है तो ये पैसा आपने सही उपयोग नहीं किया। चैरिटी हमेशा दूसरों को एम्पावर करने के लिए देनी चाहिए। चैरिटी ऐसी देनी चाहिए जो दूसरे को एम्पावर कर सके, ना कि निर्भरता पैदा करें। अगर आप टीचिंग भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सर्विस भी कर रहे हैं, तो आपको लोगों को एम्पावर करना है, अपने ऊपर निर्भर नहीं होने देना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप कहीं और नहीं जाए, वरना आगे चल के आपको सफरिंग हो सकती है और ये आप कर्मा क्रिएट करते हैं। आपके निर्णय, आपके जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा जो आप चीज दे रहे हैं लोगों को, वो आपकी दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होना चाहिए। अगर पैसा भी दे रहे हैं तो लोग आत्मनिर्भर बने और सहयोग पाए आपसे। अगर आप पैसे का उपयोग किसी ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं तो ऐसे जगह पे दीजिए जहां पे वो एम्पावर हो सके, जो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करके लोगों को एम्पावर करते रहे। गिफ्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना केवल आपको मेडिटेशन के द्वारा ही समझ में आ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे आप और ज्यादा जागरूक, अवेयर होते जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यही क्वेश्चन करोड़ों रुपए के बराबर मायने रखता है। आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपको जीवन में कौन से निर्णय कब लेने हैं, ये केवल आपकी आत्मा ही आपको बताएगी। आपकी अवेयरनेस ही आपका मार्गदर्शन करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना है और क्या मुझे करना है। मेडिटेशन आपकी आंतरिक मार्गदर्शन है, इनर गाइडेंस है। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स एक और टास्क सर ने दिए हैं, जो 3 हमको टास्क दिए थे, मेडिटेशन, रीडिंग बुक, सज्जन सांगत्य और डी क्लटरिंग का। अब सर ने एक और दिया है कि आप लोग सिर्फ 2 टाइम ही कुक्ड मील्स खाएं। हम मोस्टली इंडियंस लोग को आदत होती है नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट और मतलब वही डिनर, तो वैसा नहीं करना है। सिर्फ 2 टाइम कुक्ड मील लेना है आपको, और जब भी भूख लगे तो आप पेट भर के पानी पी लीजिए, 1-1.5 गिलास। अगर उसके बावजूद आपकी भूख शांत नहीं होती है तब आप फ्रूट्स या सैलेड कुछ ले सकते हैं। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहा हूं कि यदि आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से आत्मसात करेंगे और इसके अनुरूप जिएंगे तो आप जीवन भर इस चीज को अपने जीवन शैली में उतार सकते हैं और उससे आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी।
पहला भोजन आपको सनराइज होने के बाद खाना है, मतलब सूर्य उग जाए उसके बाद खाना है, और इस तरीके से खाइए कि वो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में, जिसको हम ब्रंच कहते हैं, उसके रूप में लीजिए। और दूसरा भोजन आपको बिफोर सनसेट लेना है। 2 कुक्ड मील लेना है, और हमेशा याद रखिए कि ये दोनों समय में आपको आधा पेट ही खाना है। थोड़ी सी भूख जरूर रह जाए, पेट भर के आपको नहीं खाना है। अगर थोड़ी सी भूख रह जाएगी तो जब आप 2 मील लेंगे तब आप उस मील को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो आप लोग इस चीज को एक्सपेरिमेंट करिए। और कल हम फ्रेंड्स थर्ड डे है, हम इसके आगे के बारे में जानेंगे। तो अभी तक के जितना भी सर ने बताया था, आप लोग नोट्स बना रहे हैं और इसको आत्मसात कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि खासकर जो नए लोग हैं वो जरूर से सिंसियरिटी के साथ इसको और सीरियसनेस के साथ इसको फॉलो करें। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी हो चुका है। मीनाक्षी जी, आपको कुछ कहना है? नहीं नीता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही आई थिंक बहुत एनलाइटनिंग सेशन था सर का आज। हम लोग को इतने सोल की गहराई के बारे में और बताया। सो आई थिंक हम सब बेनिफिट कर रहे हैं इसमें से। थैंक यू सो मच, आपको भी और सर को भी। चलिए, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं सेम मीटिंग आईडी सेम पासपोर्ट के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। और याद दिला दूं कि नवरात्रि चल रही है। रात के 10 से 11 बजे ज्ञान भारत अपने जूम मीटिंग में ग्रुप मेडिटेशन करता है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, तो जिनको भी जुड़ना है वो हमारे जूम में जुड़ के इस ग्रुप मेडिटेशन का लाभ उठा सकते हैं।